All right. So the screen is also visible, I hope. So very good evening, guys. And here we are with a new topic, comprehension, है ना? कल तक हमने क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व किया, आज से हम कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इट्स अ वेरी इजी टॉपिक. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड न्यूमरस टाइम्स इन योर लाइफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, ये टॉपिक कॉमनली आपके सारे एग्जाम में ही पूछा जाता है. सीडीएस में तो डेली मतलब डेफिनेटली क्वेश्चंस आएगा. कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेजेस आते हैं सीडीएस के एग्जाम में काफी एडवांस लेवल के आते हैं. सो यू हैव टू रीड एटलीस्ट दैट पैसेज ट्वाइस और थ्राइस टू अंडरस्टैंड व्हाट द पैसेज इज अबाउट एंड देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. एनडीए में भी आजकल हाल फिलहाल में कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आने लगे हैं. पहले नहीं आता था, बट अभी रिसेंट ईयर में भी पैसेज आया था. कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस आएंगे और आपको प्रॉपरली पढ़ना होगा. पैसेज जो है थोड़ा सा आई वुड नॉट से वेरी इजी पैसेज आता है, बट इट इज अ बिट ऑफ मीडियम डिफिकल्टी लेवल आई वुड से. ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है. जनरल टॉपिक बेस्ड रहते हैं, लाइक पॉलिटिकल या करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक्स रहते हैं. और एफकैट एग्जाम में भी कॉम्प्रिहेंशन आता है जिसमें से 3 या 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और एफकैट के एग्जाम में जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको मिलेगा वो बहुत ही इजी पैसेज होगा. दैट मीन्स इफ यू रीड दैट पैसेज एट वन गो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. एंड इट्स अ वेरी शॉर्ट पैसेज. जो पैसेज आपको एफकैट में मिलेगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक अपने एग्जाम इंग्लिश पेपर के बिल्कुल लास्ट में इसको अटेम्प्ट करना है. ये आपको पता है. सेकंड क्या है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर अकॉर्डिंगली दे ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर इन द पैसेज. नाउ ये तभी पॉसिबल है अगर पैसेज इजी है. जैसे आप ये ट्रिक एफकैट में यूज कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन ट्राई फाइंडिंग आउट द आंसर्स फ्रॉम द पैसेज. क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन से वो काफी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है. लेकिन एनडीए या सीडीएस एग्जाम में जिस तरह के पैसेजेस आते हैं उसके लिए आपको चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव स्किल. यानी आप पढ़ो वो पैसेज को और फिर आप कितना समझ सकते हो उसके बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं. तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कॉम्प्रिहेंशन से एनडीए या सीडीएस के एग्जाम में नहीं मिलेगा. So if you're an NDA or a CDS aspirant, definitely you have to read the passage first and then try answering the question. Please don't do the other way around. Okay, I hope this is clear. So before we begin practicing questions from this topic, I have brought for you the live class schedule for today. Today is 13th of Feb. सुबह 9-10 बजे हमारे डेली डिफेंस अपडेट्स और करंट अफेयर का क्लास होता है, तो वो हो चुका है. आज एसएसबी इंटरव्यू के लिए हर रोज हमारे लाइव क्लासेस होते हैं. आज ग्रुप टास्क का ओवरव्यू क्लास था. एफकेट के लिए फिलहाल 2 क्लासेस चल रही है. 3 बजे स्टैटिक जीके की और अभी मेरे साथ इंग्लिश का. एनडीए के लिए 4 क्लासेस होती है हर रोज. 10 बजे एनडीए की क्लास स्टार्ट होती है मैथ्स से. फिर 11:30 बजे होती है जीके का क्लास. तो फिजिकल ज्योग्राफी का क्लास था आज. 1 बजे जनरल साइंसेस की क्लास होती है. आज बायोलॉजी का क्लास था. और फिर आपका लास्ट क्लास होता है 4:30 बजे मेरे साथ इंग्लिश का. सीडीएस के लिए भी 4 क्लासेस होती है. पहला क्लास सीडीएस का 11:30 बजे होता है विच इज अ जीके क्लास. सो फिजिकल ज्योग्राफी का क्लास था. 1 बजे बायोलॉजी का क्लास था. जनरल साइंसेस की क्लास होती है मेरे साथ. अभी आपका इंग्लिश का क्लास है और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास 5:30 बजे होगा ऑन मैथ्स. ठीक है, सो एवरीबडी रीड द डायरेक्शंस क्विकली. छोटा सा डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ, वो है कि कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस रहते हैं है ना, उसमें आपको खुद का ओपिनियन, खुद का नॉलेज नहीं यूज करना होता है ना. बहुत बच्चे क्या करते हैं कि दे ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक अलॉट, सो दे ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन कॉमन सेंसिकल वे में. लेकिन आपको ये नहीं करना है. जो भी इंफॉर्मेशन पैसेज में प्रोवाइड किया गया है उसके बेसिस पे ही आपको आंसर करना है. ठीक है, ये चीज आप याद रखनी. चलिए, मैं जो पैसेज आपको पहले दिखाऊंगी वो आपको पढ़ लेना है, देन वी विल रीड इट टुगेदर. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पैसेज. इस तरह के पैसेज आपको एनडीए के एग्जाम में मिलेगा. ठीक है, सो इफ यू आर एन एनडीए एस्पिरेंट यू कैन गेट पैसेजेस लाइक दिस. सो प्लीज रीड इट एवरीवन. इट्स अ शॉर्ट पैसेज.
Okay, let's read it together. Self-directed learning, in its broadest meaning, describes a process in which individuals take the initiative with or without the help of others in diagnosing their learning needs, formulation of learning goals, identifying resources for learning, choosing and implementing learning strategies, and evaluating learning outcomes. Thus, it is important to attain new knowledge easily and skillfully for the rest of his or her life. What is the need for self directed learning? One reason is that there is convincing evidence that people who take the initiative in learning learn more things and learn better than people waiting to be taught. The second reason is that self directed learning is more in tune with our natural processes of psychological development. An essential aspect of maturing is developing the ability to take increasing responsibility of our own lives to become increasingly self directed. The third reason is that many of the new development in education put a heavy responsibility on the learners to take a good deal of initiative in their own learning. To meet the challenges in today's instructive environment, self directed learning is most essential. Okay, so it's about self directed learning. Okay, advantages, reasons, it is very needed. Okay, that's been discussed. Chalo start karte hain. First question. In self directed learning and individual? Yes, very good. Answer is option A. Yes, Charles Mead, very good. Takes initiative with or without the help of others. Next question. There is need for self-directed learning because. Yes, very good. Charles Mead. Answer is option B. It helps people to learn more things and learn better. Next question. Which word best describes self-directed learning? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को किस तरह के लर्निंग में आप डालोगे, कौन सी कैटेगरी? वेरी गुड, यस, इट्स एन एक्टिव लर्निंग, है ना. पैसिव लर्निंग इज जब कोई आपको सिखा रहा है, दैट्स पैसिव. एक्टिवली आप इन्वॉल्व नहीं हो, कंपल्सरी जो करना ही पड़ेगा. और रिपल्सिव मतलब डिसगस्टिंग, एक्चुअली अगली. ओके, नेक्स्ट. द मॉडर्न एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज. What kind of modern environment is it? Very good. It's instructive. बिल्कुल पैसेज के लास्ट लाइन में लिखा है, it is instructive, है ना. देखो, if you go here, last line, to meet the challenges in today's instructive environment. Got it? इसलिए instructive होगा. अच्छा, next, the synonym of the word diagnosing is. Diagnosing का synonym. यस, इट इज ऑप्शन सी, आइडेंटिफाइंग. सो हम लोग कहते हैं ना, डायग्नोस किया गया है ये डिजीज उसके बॉडी में. डायग्नोस करने का मतलब है ढूंढ के निकालना, आइडेंटिफाई करना. ओके, तो सी इज द राइट आंसर. इजी. चलो नेक्स्ट पैसेज. दिस इज अ बिट lengthier passage. This kind of passage you will get in serious exam. And tell me when you want to change the slide, guys. Okay, let me know. You have two slides. This is the first slide. You can start reading.
Okay, then let's read it from the first. It's a bit longer passage, जैसे मैंने कहा CDS में आपको इस तरह का passage मिलेगा. Let's start. Though the US prides itself on being a leader in the world community, a recent report shows that it lags far behind other industrialized countries in meeting the needs of its youngest and most vulnerable citizens. The US has a higher infant mortality rate, a higher proportion of low birth weight babies, a smaller proportion of babies immunized against childhood diseases, and a much higher rate of adolescent pregnancies. These findings, described as a quiet crisis requiring immediate and far reaching action, appeared in a report prepared by a task force of educators, doctors, politicians, and business people. According to the report, a fourth of the nation's 12 million infants and toddlers live in poverty. As many as half confront risk factors that could harm their ability to develop intellectually, physically, and socially. Child immunizations are too low. More children are born into poverty. More are in substandard care while their parents work, and more are being raised by single parents. When taken together, these and other risk factors can lead to educational and health problems that are much harder and more costly to reverse. The crisis begins in the womb with unplanned parenthood. Women with unplanned pregnancies are less likely to seek prenatal care. In the US, 80% of teenage pregnancies and 56% of all pregnancies are unplanned. Problems continue after birth, where unplanned pregnancies and unstable partnerships often go hand in hand. Since 1950, the number of single parent families has nearly tripled. More than 25% of all births today are to unmarried mothers. As the number of single parent families grow and more women enter the workforce, infants and toddlers are increasingly in the care of people other than their parents. Most disturbingly, recent statistics show that American parents are increasingly neglecting or abusing their children. In only 4 years, from 1987 to 1991, the number of children in foster care increased by over 50%. Babies under the age of 1 are the fastest growing category of children entering foster care. The crisis affects children under the age of 3 most severely, the report says. Yet it is this period from infancy through preschool years that sets the stage for a child's future. Okay. So it's talking about the how vulnerable the population of the children are in US. Okay. Okay, chalo. First question start karte hain. The main focus of the passage is on the plight of low birth weight babies. Absolutely. Teenage mothers पे कहाँ है? Main वो तो teenage mothers है is what is the reason, right? Because of this teenage motherhood, that is why there's been a threat to the children of US. है ना? तो low birth weight babies is the main focus. See. Next, children falling in which age group are most severely affected by the quiet crisis? सबसे ज्यादा अफेक्ट किसको हो रहा है? नो, इट इज वेरी गुड विशाल. ऑप्शन बी बिलो 3 इयर्स लास्ट पैराग्राफ में था. बिलो 3 इयर्स के बच्चों को ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ना? सो नॉट 1 2 3, बिलो 3. चलो नेक्स्ट. Which of the following does not constitute the quiet crisis in the US as per the task force report? Does not constitute. Absolutely. Very good. It is D. Increasing cases of teenage couples getting divorced. इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है. मोहन यू सिंह ए देखो. आई नो ऐसे आप पढ़ोगे ना तो आपको भी लगेगा ए क्यों नहीं है. ए में क्या है? लोअर प्रोपोर्शन ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज विथ नॉर्मल वेट. मतलब एक्चुअली टॉकिंग अबाउट बेबीज हुज वेट आर लेस. तो इसके बारे में तो बात किया गया है ना कि जितने भी न्यू बॉर्न बेबीज हो रहे हैं उनका वेट बहुत कम है. तो लोअर प्रोपोर्शन ऑफ न्यू बॉर्न इसका मतलब क्या है कि जिनका नॉर्मल वेट है उसका प्रोपोर्शन लो है ना? घुमा के है, ये ट्रिकी ऑप्शन है.
सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस, राइट? तो बाकी एबीसी के बारे में बात किया गया है टास्क फोर्स रिपोर्ट में, लेकिन डी के बारे में नहीं. चलो नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? Not true. Be careful about these kind of questions. नीतिश सिंह बी. सी तो ट्रू है ना. 12 मिलियन बच्चे थे. देखो, आई एम टेकिंग इट टू यू. सी, according to the report, a fourth of the nation's 12 million infants and toddlers live in poverty. मतलब क्या है? 12 मिलियन के फोर्थ क्या होता है? 3 मिलियन. यानी 3 मिलियन पॉवर्टी में रह रहे हैं, है ना? तो ये तो ट्रू हुआ ना. क्वेश्चन क्या था? नॉट ट्रू. क्वेश्चन वाज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी. द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द यूएस एंटरिंग फॉस्टर केयर हैज डिक्रीज्ड आफ्टर 1991. डिक्रीज थोड़ी हुआ है, तो ज्यादा बढ़ गया है ना? ट्रिपल हो गया, वो तो बढ़ गया है. तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट. The number of children born to married mothers in the US is approximately how many times the number of children born to unwed mothers? ये थोड़ा ट्रिकी है. C, 3 times. Sure. The answer is C. Very good. I thought यहाँ पे आप लोग गड़बड़ करोगे. Next question. Children born out of unplanned pregnancies are highly vulnerable because. पैसेज में क्या बोला गया है? अनप्लान्ड प्रेगनेंसी में के वजह से जो बच्चे होते हैं वो वल्नरेबल क्यों होता है? एब्सोल्युटली, दे आर लेस लाइकली टू रिसीव प्रीनेटल केयर. प्रीनेटल मतलब जन्म से पहले जो प्लान करके जाते हैं ना, वो तो डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह लेते हैं, राइट? तो जो अनप्लान्ड है वो तो नहीं जानते, वो नहीं लेते. तो दैट इज द थिंग. देखो यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट लाइन ऑफ थर्ड पैरा. द क्राइसिस बिगिंस इन द वूम विथ अनप्लान्ड पेरेंटहुड. वुमेन विथ अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज आर लेस लाइकली टू सीक प्रीनेटल केयर. ठीक है, तो इसीलिए डी होगा राइट आंसर. चलो नेक्स्ट. डिसाइड. प्रीनेटल मतलब बिफोर बर्थ. नेटल मीन्स बर्थ. प्रीनेटल मीन्स बिफोर बर्थ. Okay, decide which of the following factors is or are responsible for the physical, intellectual, and social underdevelopment of infants in the US. Illiteracy of parents, lack of prenatal care, poverty. Very good. Both B and C, है ना? Both B and C, यानी lack of prenatal care और poverty, इन दोनों के बारे में टास्क फोर्स रिपोर्ट ने बताया है कि that is the reason. चलो next question. An increasing number of infants in the US are in foster care on account of. क्यों है वो ज्यादातर फॉस्टर केयर में? या इन्फेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं फॉस्टर केयर में, क्यों जा रहे हैं ज्यादा? No, don't say or don't mark something as an answer which is not mentioned in the passage. Remember, I told you before I began with the practice session. Answer is A, sorry. Increasing number of single parent families with the female member working. Again, going back to the passage. यहाँ पे पैसेज में साफ साफ लिखा है क्यों फॉस्टर केयर में जो बच्चे हैं वो बढ़ रहे हैं. देखो, as the number as the number of single parent families grow and more women enter the workforce, infants and toddlers are increasingly in the care of people, मतलब foster care, other than their parents. ठीक है, ये रीजन है, क्लियरली बताया गया है. सो आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन.
The task force report seems to be based on the data pertaining to the period. (1987). Are you sure? The answer is not A, okay? It is option D. 1950, very good, Mohan. 1950 to 91, क्यों? Going back to the passage again. Clearly again यहाँ पे 1950s के बाद से mention किया गया, third paragraph. Since 1950, the number of single parent families has nearly tripled. यानी डेटा जो है वो 1950 के बाद से लिया गया है, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट इट इज द रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड. ठीक है. फिर 1987 टू 91 में कितना फॉस्टर केयर के बच्चे इंक्रीज हुए हैं वो बताया गया है, बट 1950 से डेटा लिया गया है. गॉट इट. तो डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो इजी है. चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द गिवन वर्ड एज यूज्ड इन द पैसेज. कॉन्फ्रंट. इसका सिनोनिम ढूंढना है. यस, कन्फ्रंट करने का मतलब आमना सामना, सॉरी आमने सामने. सो यस, सामना करना. सो ए इज द राइट आंसर, फेस. ऑलराइट. चलो नेक्स्ट पैसेज. This is also a bit longer passage and it may come, this kind of passage may come in CDS exam. So everybody start reading it. There are 2 slides. This is the first slide. Let me know when you want to change it to the second slide.
ओके, लेट्स रीड द पैसेज। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन द सेंस थोड़ा सा एडवांस लेवल के है ना, एज कंपेयर टू द प्रीवियस पैसेज। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। The stock taking done at the first National Convention on Consumer Protection served to highlight the areas that called for special attention to sustain the momentum of the movement as genuine forum for safeguarding the people's interests, spreading awareness about the rights of the consumers and the relief open to them in case they did not get their money's worth of goods and services has rightly been identified as the first priority. While this may not be a difficult task in urban areas where the movement is concentrated at present, taking it to the vast rural hinterland calls for a multimedia approach in which radio and television have a crucial role to play. The involvement of the 500 odd consumer organizations in the country in publicizing the concept of fair trade practices and the remedies available against their violation will prove rewarding if the message is conveyed through village bodies. Government efforts remained confined at best to setting up the infrastructure after the formal launch of the movement with the enactment of the Consumer Protection Act. The mounting backlog of cases in consumer courts points to the need for toning up the district level redressal machinery. The main objective of the movement is the creation of a culture that denies place in the market for products that are not consumer friendly. This is possible only if consumer bodies take over the watchdog role performed by the government till now and exercise social control over the market to see that the benefits of liberalization are not reaped by traders alone. But the plea to industry to exercise self regulation and maintain minimum standards of quality and devise appropriate pricing is bound to go unheeded unless strict measures are taken to ensure compliance. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। The first National Convention on Consumer Protection has फर्स्ट कन्वेंशन ने क्या किया? सिर्फ कंज्यूमर राइट्स के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड किया, वो तो सी भी किया है ना। वेरी गुड, आंसर इज ए, हाईलाइटेड द एरियाज फॉर स्पेशल अटेंशन। हमें पता था क्या प्रॉब्लम था, लेकिन फर्स्ट जो नेशनल कन्वेंशन हुआ था उन्होंने जिस एरिया को स्पेशल अटेंशन देना चाहिए उसको हाईलाइट किया। ठीक है, वो बी में भी है, वो सी भी है, बी इज ऑल्सो राइट बट सी इज ऑल्सो राइट। राइट, तो हमें बी या सी आंसर नहीं करना, हमें ए आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट proposes to give the consumer protection against किस चीज के अगेंस्ट कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दे रहा है? किस चीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है? वो तो आप अगर देखो 10 रुपए का क्रीम है ना, आप 100 रुपए से खरीद रहे हो और आप बोल रहे हो यार ये तो 10 रुपए वाला काम नहीं कर रहा, तो क्या हो रहा है अल्टीमेटली? दिस इज नॉट द वर्थ ऑफ द मनी दैट आई हैव स्पेंट। नो, about the passage, what it is talking about? Cheating by selling substandard goods. चीटिंग है ना, चीटिंग हो रही है ये, तो उसके अगेंस्ट कंज्यूमर को प्रोटेक्शन के लिए, या फिर मान लो किसी का पैसा चीट कर लिया तो उसके अगेंस्ट कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये एक्ट प्रपोज करता है। राइट, सो इट्स चीटिंग बाय सेलिंग सबस्टैंडर्ड गुड्स, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट बाय, गवर्नमेंट ने क्या किया? हाउ डिड गवर्नमेंट contribute to the consumer protection movement? पैसेज में क्या लिखा है? आई नो इट्स गेटिंग अ बिट डिफिकल्ट क्योंकि पैसेज आप नहीं देख पा रहे हो। अच्छा देखो, मैं एक बार दिखा देती हूँ पैसेज। Government efforts remained confined at best to setting up the infrastructure, right? So आंसर इज सी। हाँ, बी सी डी कैसे लग रहा है?
बैकलॉग केसेस को तो क्लियर नहीं कर रहे हैं ना गवर्नमेंट, या इनेक्ट नहीं कर रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट कर रहा है। दैट इज इट, दैट इज इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर। सी, चलो नेक्स्ट, स्प्रेडिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट टू द रूरल एरियाज नीड्स, क्या चाहिए? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। दिखाओ क्या पैसेज का वो पार्ट, दिखा देती हूँ, रुको। बट व्हाट डज इट नीड? बताओ। आंसर इज बी, बी डायरेक्ट आंसर था ना, बी मल्टीमीडिया अप्रोच, नॉट डी। मल्टीमीडिया अप्रोच, टेलीविजन रेडियो से चीजों को स्प्रेड करना, अवेयरनेस स्प्रेड करना, मल्टीमीडिया अप्रोच चाहिए। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रोल ऑफ कंज्यूमर बॉडीज इज, क्या रोल है कंज्यूमर बॉडीज का? टू फंक्शन एज अ वॉच डॉग। श्योर। एक्सरसाइज सोशल कंट्रोल ओवर द मार्केट, मेकअप ली, बी सी डी सारा, ए भी बोल दो। आंसर इज बी, ओके, सो मीत इज राइट। टू फंक्शन एज अ वॉच डॉग की तरह फंक्शन करना। गो बैक टू द पैसेज अगेन, इट इज रिटन हियर, this is possible only if consumer bodies take over the watchdog role, okay, performed by the government till now, right? So as a watchdog, अगर वॉचडॉग की तरह परफॉर्म करेगा तो ही थर्ड सी में जो लिखा है, डी में जो लिखा है, नॉट सी, डी में जो लिखा है वो हो पाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली इसका फंक्शन क्या होगा? टू फंक्शन एज अ वॉचडॉग। गॉट इट? आई नो द कॉम्प्रीहेंशन, द पैसेज वाज अ बिट एडवांस्ड, और इसके लिए आपको एग्जाम में पैसेज मिलेगा तो आप बार बार पैसेज में जाके पढ़ के आंसर कर सकते हो। थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू शो यू द पैसेज एवरी टाइम, है ना, पैसेज सामने नहीं रहता। बट ठीक है, अकॉर्डिंग टू वट एवर यू आंसर वॉज राइट। चलो नेक्स्ट पैसेज पे मूव ऑन करेंगे। दिस इज अ वेरी इजी पैसेज, इस तरह का पैसेज एनडीए में आ सकता है और एफकेट में भी आ सकता है। ठीक है, सो प्लीज रीड इट क्विकली। ओके, एक बार पढ़ लेते हैं। देखने में इजी है पर क्वेश्चन जबरदस्त आएगा, ठीक है, तो बी केयरफुल। द फर्स्ट स्टेप इज फॉर अस टू रियलाइज दैट अ सिटी नीड नॉट बी अ फ्रस्ट्रेटर ऑफ लाइफ।
It can be, among other things, a mechanism for enhancing life, for producing possibilities of living which are not to be realized except through cities. But for that to happen, deliberate and drastic planning is needed. Towns, as much as animals, must have their systems of organs. Those for transport and circulation are an obvious example. What we need now are organ systems for recreation, leisure, culture, community expression. This means abundance of open space, easy access to unspoiled nature, beauty in parks and in fine buildings, gymnasia and swimming baths and recreation grounds in plenty, central spaces for celebrations and demonstrations, halls for citizens' meetings, concert halls and theaters and cinemas that belong to the city. And the buildings must not be built anyhow or dumped down anywhere. Both they and their groupings should mean something important to the people of the place. Okay? So it's about city life. How should be a city planned? क्या होना चाहिए cities में? This is what it is about. Okay? चलो start करते हैं. First question. Cities can be made to provide full facilities for life only if कब होगा cities full facilities for life? Only if. Very good. D is the right answer. These are thoughtfully and vigorously designed to serve people's needs. बिल्कुल सही. Next question. A suitable title for the passage would be. Very good. The need for planned cities. B is the right answer. Entertainment centers की सिर्फ जरूरत है cities में. वो तो और चीजों की भी जरूरत है. सिर्फ लीजर का थोड़ी है, कल्चर का भी है, कम्युनिकेशन एक्सप्रेशंस के लिए भी है ना, कम्युनिटी एक्सप्रेशंस के लिए. सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट. अ सिटी नीड नॉट बी अ फ्रस्ट्रेटर ऑफ लाइफ मीन्स दैट, पहला लाइन जो था, अ सिटी नीड नॉट बी अ फ्रस्ट्रेटर ऑफ लाइफ, क्या मतलब है इसका? डी. यस, आंसर इज डी. A city should not defeat the fulfillment of life's aspirations and aims. No, sorry, it is B, not D. It is B. City life provides all the essential needs of life. हमारे लाइफ में जो कुछ भी जरूरत है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो सिटी में ही मिलेगा. Okay, that is what it meant, that city should not be or need not be a frustrator of life. क्योंकि अगर आप देखो पैसेज में वापस जाओगे, फर्स्ट लाइन के बाद इसको एक्सप्लेन किया गया है. अ सिटी नीड नॉट बी अ फ्रस्ट्रेटर ऑफ लाइफ. इट कैन बी अमंग अदर थिंग्स अ मैकेनिज्म फॉर एनहांसिंग लाइफ, मतलब लाइफ को और कंफर्टेबल बनाना, एनहांस करना, फॉर प्रोड्यूसिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ लिविंग विच आर नॉट बी रियलाइज्ड एक्सेप्ट थ्रू सिटीज. ऐसे जिंदगी जीना जो सिटीज के बगैर मुश्किल हो या हम कभी सोच भी ना सके. दैट मीन्स इट इज फोकस्ड ऑन द लाइफ लिविंग इन अ सिटी, है ना, लाइफ इन अ सिटी, सिटी लाइफ. तो इसलिए बी होगा करेक्ट आंसर, नॉट डी, क्योंकि डी में इट्स टॉकिंग अबाउट लाइफ एस्पिरेशंस एंड एम्स. ओके, डिफीट नहीं करना, मतलब सिटी लाइफ प्रोवाइड करेगा. राइट, सो बी इज द राइट आंसर. अच्छा, नेक्स्ट. Which one of the following has the opposite meaning to the word frustrator in the passage? फ्रस्ट्रेटर का ऑपोजिट क्या होगा? फ्रस्ट्रेट मतलब क्या? फ्रस्ट्रेटर क्या करता है? आपको डिस्करेज करता है ना? यस, आंसर इज ए, प्रोमोटर, जो प्रमोट करता है ना, एनहांस करता है. सो इट्स ऑपोजिट ऑफ फ्रस्ट्रेटर. अपलॉडर मतलब जो अप्रिशिएट करता है, प्रोमोट करना इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बिल्डिंग मस्ट नॉट बी बिल्ट एनी हाउ और डम्प्ड डाउन एनीवेयर. द स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट बिल्डिंग. क्या बोलना चाह रहा है ये स्टेटमेंट? बिल्डिंग्स को क्या करना चाहिए? बी.
Yes, you are absolutely right. Answer will be B. Okay. Should be constructed according to some suitable design, not indiscriminately. Okay. Next question. The word drastic in the passage means easy. Drastic मतलब क्या? Drastic changes, drastic steps. Drastic means something big. Very good, Mohan. It is B, powerful. Drastic means something that is powerful, very big, huge. Chalo, next question. The author talks about unspoilt nature. In what way can nature remain unspoilt? नेचर को अनस्पॉइल्ड कैसे रखा जाए? This is a bit difficult, right? D. Yes, very good. Answer is D. By allowing nature to retain its primitive undomesticated character. वैसे अगर आप रखोगे तो नेचर खराब नहीं होगा, स्पॉइल्ट नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द ऑथर द फंक्शन ऑफ अ सिटी इज टू. ऑथर के अनुसार सिटी का फंक्शन क्या है? वेरी गुड. टू रेज द टोन ऑफ लाइफ and make it more meaningful. D is the right answer. Next one, last question. The opening sentence of the passage implies that. Opening sentence वही था. The city need not be a frustrator of life. क्या imply करता है? Very good. Option B is the right answer. Only a city can provide the means to lead a full life. है ना? So that is what it meant. So with this, we complete our practice of comprehension passage. This was class 1. कल हम लोगों का second class होगा जहाँ पे हम लोग कुछ और question practice करेंगे from this topic itself. और as I have already mentioned before, AFCAT aspirants के लिए है ये 19th to 21st Feb तक हमारा AFCAT marathon session चलेगा from 12 p.m. to 4 p.m. So make sure you are attending these marathon sessions to have your final practice before you go for the exam, right? Which is going to begin from the week onwards, right? So yes, anybody has any question can ask me now. एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा था, आई थिंक विशाल ने पूछा था कि व्हाट इज द राइट टाइम. आई थिंक व्हेन इज द राइट टाइम टू डू पैसेज इन पेपर. मैंने ये पहले ही कह दिया था कि बिल्कुल लास्ट में करना है, ठीक है? तो वो आपको करना पड़ेगा. मेक श्योर कि आपके पास कुछ टाइम बाकी है व्हेन यू आर रीडिंग द पैसेज एंड आंसरिंग, स्पेसिफिकली इफ यू आर गोइंग फॉर एनडीए और सीडीएस. एफकेट के लिए फिर भी क्वेश्चन देख के आप पैसेज से आंसर निकाल सकते हो डायरेक्टली, लेकिन एनडीए सीडीएस के लिए यू नीड टू हैव एटलीस्ट 5 minutes टाइम सो दैट यू कैन रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस. ओके, आई होप this is it. Any question if you want to ask, please ask. नहीं, you cannot read questions first क्योंकि पैसेज काफी डिफिकल्ट आता है. क्वेश्चन पढ़ के और कंफ्यूज हो जाएगा माइंड, है ना? पहले पैसेज पढ़ो, एक बार पढ़ो, नहीं समझ आएगा, सेकंड टाइम पढ़ो, नहीं समझ आएगा, थर्ड टाइम पढ़ो. तब तक पढ़ते रहना है जब तक आपको समझना में नहीं आ रहा हो. थर्ड टाइम आई होप डेफिनेटली आपको आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद ही क्वेश्चन देखना है. मीत ये आपके ऊपर बेस करता है क्योंकि ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में हमेशा कहती हूँ बिल्कुल लास्ट में रखो, फिर पहले कॉम्प्रिहेंशन रख दो, या आपकी मर्जी है. कुछ बच्चे पहले ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, आई मीन सेकंड लास्ट रखते हैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस और फिर लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन. कुछ बच्चे सेकंड लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन लगते हैं और एकदम लास्ट में ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस. तो आपको जो भी टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा इजी लग रहा है वो सेकंड लास्ट में रखना है चाहिए, है ना? तो अगर आपको ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस सबसे डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको लास्ट में रखो, है ना? आपकी मर्जी. पैटर्न डिफिकल्ट डिफरेंट होता है लोगों के लिए. तो ईदर कीप द कॉम्प्रिहेंशन सेकंड लास्ट और लास्ट. दैट इज व्हाट आई मेंट. ओके, चलो, सो दैट्स इट. एनी अदर क्वेश्चन?
राइट। सो इसके बाद आप लोगों का मैथ्स क्लास है 5:30 से, सो प्लीज ज्वाइन। ओके, सी यू टुमारो।